हेलो पिला माने आसंतु आज आम नवम श्रेणी इंग्राजी बहीर ए हीरो एही पाठरे थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक विषय डिस्कसन करिवा। पिला माने जदि वीडियो भल लागियो ताहले आपण मानकर सांग मानकु भी जणे देबे। देखंतु प्रथम प्रश्नटा कोन दैछि बिले एक नंबरटा देखिया पिले एक नंबर आमर कोन दैछि स्वामी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। खबर कागज जो रिपोर्ट टे प्रकाश पाइथिला स्वामी बहुत आनंदित थिले। स्वामी किए ना जे कि पाठर हीरो। एबाउट द ब्रेव विलेज बॉय कहा विषय रे प्रकाश पाइथिला ना गाँव गोटे साहसी बालक विषय रे। व्हाट वेर स्वामीज व्यू याकू नहीं कि स्वामी मत कौन थिला हैला पिले ताहले चलतु उत्तर देखिबा। हमें उत्तर टे कोन हेबो माने आपण माने उत्तर रे लिखिबे अबाउट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्वामीज व्यू वेर दैट द पर्सन हु हैड ए फ्लाइट with the tiger must have been a very strong grown up man, not at all a boy. He completely rejected the statement that the person who fought with the tiger was a village boy. पिला माने एही भली लिखिबे आपण माने। तापरे 2 नंबरटा देखंतु 2 नंबर रे कोन अछि पिले 2 नंबर देछि व्हाई डिड स्वामीज फादर वांट हिम टू स्लीप एलोन। कहीं स्वामीर बापा स्वामीर माने पिले जो हीरो अच्छी ये हीरो एठारे स्वामी को हीरो रूप में निया हीरो नथिले किंतु परे ताकू ता बापा हीरो करेदेले हैला। एठी कोन अछि व्हाई डिड स्वामीज फादर वांट हिम टू स्लीप एलोन कहीं स्वामीर बापा स्वामी को एकला सोइबा पई बोली चाहिले हैला। तो आर उत्तर रे लिखिबे पिले स्वामीज फादर वांटेड स्वामी टू स्लीप एलोन टू प्रूव दैट ही हैड करेज हैला प्रमाण करिया पई जे से साहस कि नाही। तापरे 3 नंबरटा कोन अछि बोले 3 नंबरटा देखिबा हाउ डिड स्वामी रिएक्ट टू हिज फादर्स प्रपोजल तांको बापार प्रस्ताव रे कि भली से रिएक्ट कले हैला जवाब देले टू स्लीप एलोन कोन प्रस्ताव थिला जो एकला सोया पई जो कहिथिले। आंसर टी कोन लिखे पिले आंसर लिखिबे स्लीपिंग एलोन वाज ए frightful proposition of Swami. Swami's thought sleeping alone would keep him trembling and awake all night. ହେଲା तापरे 4 नंबर कोन दिछि how did Swami feel when he was left alone in his father's office at night. How did Swami feel स्वामी कि भली से अनुभव कले जेते बेले ता बापा ताकू तांको ऑफिस रे राति रे एकला छाड़ देले सोया पई। उत्तर लिखिबे when he was left alone in his father's office at night Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. His heart beat faster as he remembered the story of devils and ghosts. He was faint with fear. हैला पिले तो वर्तमान हमें कौन देखिबा 5 नंबर कौन दिछि व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डिड ही हैव व्हाइल ही वाज स्लीपिंग देयर केउ प्रकारर ड्रीम आ स्वप्न गुडाका आसिला जेते बेले से सेठी सहिले कोडी ता बापांकर ऑफिस रे। तो उत्तर रे लिखिबे व्हाइल ही वाज स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस स्वामी हैड ए ड्रीम इन व्हिच a tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He tried hard to escape, but his feet did not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratching the ground. 6 नंबर देखंतु 6 नंबर कोन अछि Why did he wake up कहीं से चेता ही गेले। उत्तर लिखे स्वामी woke up because he had a dream in which a tiger followed him, scratched the ground and there was a light thud. तापर 7 नंबर को जिया बोले 7 नंबर कोन दिछि 7 नंबर कोन दिछि what made Swami desperate ता उत्तरटा लिखिया he is staring
in the darkness something moving down the wooden leg of the bench and roasting made Swami desperate. 8. What made him attack the burglar? यार उत्तर कौन लिखिए Swami's feeling that his end had come and that he would be pulled out and turned to sad made him attack the burglar. ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଉପରକୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ସପୋଜ ୟୁ ୱେର୍ ଆସ୍କଡ୍ ଟୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ ମନେକର ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀକି କିଛି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ହାଉ ଉଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହା କିଭଳି କରିବେ ରାଇଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ये जो चार्टा देछि को वार्डटा ता पई एप्रोप्रिएट उपयुक्त हेबो कहिछि पिले तो एथरो उपयुक्त हबो लास्ट टे क्लेवर बट नॉट करेजियस से चतुर थिले किंतु साहसी नथिले एमती तो वर्तमान जिबा आमे तळे थिबा प्रश्नटी 10 नंबर टी अछि 10 नंबर को डिस्कशन करिया 10 कोन हेछि व्हाट डिड स्वामी ड्रीम इन द ऑफिस स्वामी कोन स्वप्न देखिले ऑफिस रूम रे एरो आंसर बी हम उत्तर टी पिले आंसर बी कौन दी ए टाइगर चेस्ड हिम एंड ही टाइड हार्ड टू एस्केप बट कुड नॉट टाइड गोटे बाघटी ताको गोड़ौले ना कि से चेष्टा करुले खसी जावाई किंतु पारि पार नथिले तापर जीवा आउ टिके ऊपर को उठे दउची ईडा करिया ए कोन दी लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर चलंतु ए टेक्स्ट जो तळे अछि ताको भलो भाबरे जानिबा बुझिया चेष्टा करिया ना डिस्कस हाउ स्वामी फेल्ट बीइंग फोर्स्ड टू स्लीप एलोन जेतेबेले स्वामी को एका सोइबा पई बोली फोर्स करा गला से कोन अनुभव कले ताहा विषय रे डिस्कस करंतु आंसर लिखिबे पिले बीइंग फोर्स्ड टू स्लीप एलोन फोर्स्ड जेतेबेले बापा को द्वारा फोर्स करा गला हला सेठी की सोया पे बोली जबरदस्ती पठाला ना बीइंग फोर्स्ड टू स्लीप एलोन वाज ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन फॉर स्वामी इट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट ही फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी ही वाज पेन्ड एंड एंग्री द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स केम क्राउडिंग इनटू हिज माइंड ही वाज फेंट विथ फियर तापर 2 नंबर कोन अछि हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड टू स्लीप एलोन इन ए रूम तुमको जेते बेले एकला सोया पे कुहा जियो तुम के भली भाबे अनुभव करिवो डू यू शेयर स्वामीज फीलिंग कोन स्वामी रो जो फीलिंग थिला ताकू तुमे शेयर करिवो की उत्तर रे कोन लिखाबो इफ आई वर मेड टू स्लीप एलोन इन ए रूम आई वुडंट बी सच मच scared like Swami. It is because I am advanced in age, unlike Swami, who is a little boy in class 2 only. तापर 3 नंबर कौन दिया बोले 3 नंबर जीवा हाउ डिड स्वामी फील इन द डार्कनेस उत्तर लिखबे एज नाइट एडवांस्ड एंड देयर वाज डार्कनेस ऑल अराउंड स्वामी's हार्ट बीट फास्टर He remembered the story of devils and ghosts he had heard from his friends. Every moment he expected the devils to come off and clutch at his throat or carry him away. He shut his eye tight and encased him in his blanket. He kept having terrible dreams in his sleep. 4 नंबर पिले 4 नंबर को जीवा डिस्कस स्वामी's रेस्पॉन्स टू द मूवमेंट इन द डार्कनेस स्वामी रो रेस्पॉन्स विषय लिखा से कौन कौन प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले जो अंधार रे से लढुथिले उत्तर रे लिखिबे स्वामी हियर्ड सम रूस्टलिंग साउंड मूविंग डाउन द बेंच ही गैज्ड एट इट इन हॉरर ही थॉट द डेविल वुड पुल हिम आउट and tear him to
shred. So he frantically crawled from under the bench and hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ୱାଜ୍ ସ୍ୱାମୀ ରିଏଲି କରେଜିୟସ୍ ସତରେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସତରେ କରେଜ୍ ସାହସୀ ଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଏଲି କରେଜିୟସ୍ ପିପୁଲ୍ ଥଟ୍ ଦାଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ୱାଜ୍ କରେଜିୟସ୍ ଫର୍ which he hugged the burglar with all his might and used his teeth on his leg like a mortal weapon. 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ପିଲେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ courage is everything strength and age are not important ସାହସ ସବୁ କିଛି strength ଆଉ age ବଳ ଆଉ ବୟସ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ आर उत्तर रे आमे कौन लिखिबा courage is the ability to do something that you know is right or good even though it is dangerous frightening or very difficult strength or age will not help one to do such a thing that is why courage is so important ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମର ଏଫ୍ ଅଛି ଏଫ୍ଟିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ ସମ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କରିବା ଲର୍ନ ଶିଖିବା କ'ଣ ନୂଆ ଅଛି ଦେଖିବା ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାକେଟ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି द वार्ड गिभेन इन द ब्राकेट ब्राकेट रे थिबा वार्ड टीए से स्टोरी रु आसीची को स्टोरी रो ना हीरो हीरो पाठर कहानी रु द एक्सप्रेशन इन ईच सेंटेंस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आफ्टर दैट सेंटेंस द एक्सप्रेशन इन ईच सेंटेंस प्रत्येक वाक्य रो एक्सप्रेशन गुडाक से गुडा मीनिंग देखौची मीनिंग ऑफ द वर्ड आफ्टर दैट सेंटेंस रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रॉम of the word in bracket तो सेगुड़ाक कौन एप्रोप्रिएट रे उपयुक्त रे लेख है ब्राकेट भितर चाहतु पढ़ले आम जापर एग्जांपल कौन अच्छी द टीचर लुक्ड एट मी कंटिन्यूअसली बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन फिक्सडली एटा लिखाई ना आपको भल भाव लिखापी कही ना टी ऊपर को उठे दूची आंसर कौन लिखाई द टीचर लुक्ड एट मी फिक्सडली बिफोर आस्क्ड द क्वेश्चन द टीचर लुक्ड एट मी ए जगह फिक्सड लगी नहीं फिक्सड बिफोर ये जो कंटिन्यूस जगह फिक्सड लगी तो एमती आम लगे अन्य गुड़ाक जमी प्रपोजिशन अच्छी मुम्बल अच्छी है क्या बदल लगे चलतु एकड़ा करवा एकड़ा कौन अच्छी द प्लान ऑफ एक्शन The plan of action suggested by the student was not accepted by the headmaster. Proposition नहीं proposition तो आर उत्तर रे कौन लिखिबे पिले उत्तर ए भली लिखिबे the proposition suggested by the students was not accepted by the headmaster बुझी गेला तापर दुडा देखु तू the child spoke in an unclear manner which her mother could not hear मुम्बल लगेबार अच्छी केमती लगे द चाइल्ड मुम्बलेड लगे मुम्बल मुम्बलेड हो पास्ट रे लिखिबे द चाइल्ड मुम्बलेड व्हिच हेयर मदर कुड नॉट हियर तापर तल को जीवा आउ कौन अच्छी देखिबा देखंतु बहुत गुड़े अच्छी My friend sleeps in a separate room because he breathes noisily while asleep snore snore डाको लगेबे चलते लगे देखा स्नोर केमती लगे एमती लिख ये कौन माय फ्रेंड स्लीप्स इन ए सेपरेट रूम बिकॉज ही स्नोर्स व्हाइल एस्लीप स्नोर अच्छी स्नोर एस लगेदेवे तापर 4 नंबर द पेशेंट्स पेनफुल कंडीशन अफेक्टेड एवरीवन एगोनाइज लगेबे ना एगोनाइज लगेबा
The patient's painful condition agonized everyone. Agonized जड ई अच्छी ଆଉ ଗୋଟେ did ଲଗେଇବେ 5 number. The boy was not prepared and so did not want to take the examination. Hesitate ଅଛି ପିଲେ hesitate କୋଉଠି ଲଗେଇବେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବେ the boy was not prepared and so hesitated ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ did ଲଗେଇବେ to take the examination 7 number. The low continuous sound of the bee adds charm to the garden. Humming तो द हमिंग लगेदेवे प्रथमे दा पाखरे हमिंग लगेदेवे of the bee adds charm to the garden एभली लिखिबे 7 नंबर देखंतु the surface of my car was damaged due to the accident कार रो सरफेस डैमेज हे गेला एक्सीडेंट लगी एको स्क्रैच लगे पई कहछि the surface of my car was scratched लिखिबे स्क्रैच को स्क्रैचेड पास्ट टाइम रे लिखि देबे due to the accident तापर कौन अच्छी तल टे देखु तलटा देखा फॉलोइंग सेंटेंस occur in the story you have read in section 1 section 1 रे जहाँ भी पढ़ी से गुड़ाक आम देखा कौन एक अच्छी हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर गोटे बालकोड़ी किभली बाघ सहित लड़िले दुईटा एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेवलिंग कौन दीजिए प्ले फाइट इन सेंटेंस वाज इज ए भर्ब सेंटेंस वन रे फाइटा भर्ब रूप रे काम करुची चेंज इन सेंटेंस टू इन ए नाउन सेंटेंस दुई रे से फाइटा कौन को रूप रे चेंज होईची ना नाउन रूप रे नाउ रीड दिस सेंटेंस बर्तमान चलतु ए सेंटेंस पढ़िया ही गॉट इनटू ए फाइट विथ ए मैन इन द बार दुईटा वी चेंज आवर कार एवरी 2 years often in English one comes across word which can function both as noun and as verb in different context बेले बेले कौन ना गोटे वर्डटी नाउन रूप रे एवं को रूप रे verb रूप रे भी काम करे both as noun and verb in different context अलगा अलगा context रे read the story again the pick out 10 such words ए स्टोरी पुणी थे पढ़ी कौन करार अच्छी पिकआउट करूँ पिकआउट करिया कौन 10टा वर्ड देन यूज इच वर्ड इन 2 डिफरेंट सेंटेंस प्रत्येक वर्ड को आम 2टा अलग अलग वाक्य लिखा ऑफ योर ओन मेंशनिंग नाउन यूज एंड वर्ब यूज है निजे निजे ताको मेंशन करियो नाउन रे आउ वर्ब रे केमती लिखिबे प्रथमे आम लिखा रिस्क रिस्क मान कौन लिखियो डोंट टेक एनी रिस्क व्हेन यू आर ड्राइविंग एटा नाउन हैला ए जगह नाउन लगला तापर रिस्क को पुणी लिखा इफ यू डोंट वर्क हार्ड नाउ यू रिस्क फेलिंग योर एग्जाम एठी हमर वर्ब रूप रे लागिला पुणी दुईटा डिस्प्यूट द टू मेन गॉट इनटू ए डिस्प्यूट ओवर मनी एठी नाउन रूप रे डिस्प्यूट लगी तापर वर्ब रूप रे जदि लगेबा आमे लिखिबा ही क्लेम्स he won but I dispute that 3 नंबर वर्ड आम होप लिखा होप कौन she came in the hope of seeing him ये नाउन रूप रे पुणी वर्ब रूप लिखले I hope you feel better soon 4 नंबर साइलेंस को लिखा the two men sat in silence नाउन रूप रे लगिले he silenced her with an angry look एठी verb रूप रे 5 नंबर स्लीप डी को we did not get much sleep last night एठी नाउन रूप रे लागला स्लीप पुणी verb रूप रे लिखिले did you sleep well last night 6 रे माइंड नाउन रूप रे लिखिले have you made up your mind which college to go to verb रूप रे लिखिले you should mind your own business पेन को से लिखा एस्पिरिन इज यूज्ड टू रिलीव पेन नाउन रूप रे तापरे इट पेन्स मी टू थिंक हाउ मच मनी वी हैव वेस्टेड
एटा वर्ब रूप रे हला पुणी स्ट्रेन को लिखले रनिंग डाउन हिल पुट्स स्ट्रेन ऑन द नी एटा नाउन डोंट रीड इन द डार्क यू विल स्ट्रेन यूर आई एटा वर्ब मु वाक्यर शेष रे जो एन लिखी सेटा नाउन होबो जाउ कि ब्रैकेट मध्य रे वाक्यर शेष रे भी लिखी से गुडा को वर्ब पुणी 9 नंबर ड्रीम आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट एटा नाउन I have always dreamed of winning lots of money एटा verb 10 नंबर fear को लिखिले he was shaking with fear after the accident noun we all fear illness and death verb पुणी जी को चल जी रो जदि देखिबा लेट्स लर्न लैंग्वेज शिखिबा लैंग्वेज कोन दीजी when we repeat the actual word of a speaker without making any change it is called direct speech direct speech or indirect speech विषय ना when we give the exact meaning of a remark of a speech without necessarily using the speaker's exact word it is called indirect speech चलो तो क्यों भली अच्छे देखिए देखो तो एग्जांपल देछि ही सेड से कहिले डायरेक्ट स्पीच रे दुईटा कमा लागुची एपटे ना एमती एमती एडा लागुची एपटे भी लागुची आई हैव लॉस्ट बोली तापर इनडायरेक्ट स्पीच देखो तो ही सेड परे एटे दैट लागुची दैट लागी कमा उठी जाउची मन रहिला तापर जिबा हमें नोटिस दैट एडा पढि देले पुणी सब मन रहि जिवो जमते एकटा देखि इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड ऑफ ए स्पीकर आर प्लेस्ड विद इन कोटेशन मार्क हैला ए जो मार्क जो अछि आगु कहिबे कोटेशन मार्क भितर रहइबो कोडारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच रे रहइबो कोटेशन मार्क तापर दुइडा इन इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब इन द केस ऑफ ए स्टेटमेंट said in the sentence given above is often followed by that इंडायरेक्ट स्पीच कौन फॉलो करिवो दैट इंडायरेक्ट स्पीच दैट आसीबो आमे देखिथिले एंड देयर इज नो कॉमा इंडायरेक्ट स्पीच कॉमा रहिबोनी तीनडा द प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन इंडायरेक्ट स्पीच फॉर एग्जांपल आई इन इंडायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड टू ही आई जदि थिबो ताहले सेडा कोथरे चेंज हेजियो ही रे चेंज हेजियो referring to the speaker the subject of verb said in indirect speech charida when the reporting verb is in the present simple present continuous present perfect there is no change of tense form of verb in the reported speech रे verb रो कोनोसी चेंज हुए नहीं से tense को tense रे थिले भी पांचड़ा when the reported verb is in the past tense the verb is indirected speech is also changed from the present to the past form जेमिति कि am changed to was जदि am थिबो am डा होचे हम प्रेजेंट सेटा पास्ट हैला परे was लागि छिबो ए सब बुझिबा जदि आमे किछि गुटे एग्जांपल करिबा हला हियर आर सम मोर एग्जांपल किछि अधिक एग्जांपल देखि दबा ता परे हमें जानि परिबा साउंड स्वामी सेड स्वामी कहिले तापर आसिला कोटेशन कमा योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक आ आपणकर आईन बहिर पछपटे ये थाई पारे कोन बिच्छू ना विश्व कंकड़ा स्कॉर्पियो डायरेक्ट स्पीच रे हला कोटेशन लागी आछि तापर ता कोन लेखा जी स्वामी टोल्ड हिज फादर दैट हिज ऑफिस रूम वाज वेरी डस्टी एंड देयर माइट बी स्कॉर्पियो बिहाइंड हिज लॉ बुक एटी कोन चेंज हला कोटेशन कमा उठी गला सेडडा हमरो टोल्ड हे गला प्रेजेंट रे थिला सेडा कोथरे गेला पास्ट रे हे गला हला यूर ऑफिस थिला सेड हिज ऑफिस हे गला तापर जिबा टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एडी हमको निजे करिबा को कहिछि काहे कि टर्न माने कर चेंज करो एक नंबरटा कोन दिछि
फादर सेज तापर कोटेशन कमा ये कमा रहा तापर कोटेशन भितर कौन है आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग बॉट ऑफ है यहाँ कौन हम आपको जदि आम करवा फादर सेड दैट है इनडायरेक्ट रिकॉल रे फादर सेड दैट ही डिड नॉट एट ऑल लाइक द वे ही वाज बीइंग ब्रॉट अप है पे तापर 2 नंबर देखो ये नंबर देनी ये गोटे नंबर हम है 2 नंबर इफ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल या उत्तर रे लिखिले 2 नंबर फादर ड्रू स्वामी's attention एमती हो फादर ड्रू स्वामी's attention to the fact that if he did it he would make him the laughing stock of his school है पिला माने तापरे 2 नंबर रे क्वेश्चन कोन आसीची सेटा भी देखिदबा 2 नंबर रे कोन कोन क्वेश्चन आसीची लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस तल को सेंटेंस गुड़ा देख कही गेनी फ्लीडेड व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम इन इनडायरेक्ट स्पीच द कोटेशन क्वेश्चन विल बी ग्रैनी आस्क्ड फादर व्हाई ही डिस्टर्ब्ड स्वामी कहीं से स्वामी की डिस्टर्ब करले नोटिस द तल को जीवा एति तो सरला नोटिस दास देखो नोटिस दैट कौन देछि 1 2 3 3टी पॉइंट देछि प्रथम पॉइंट कौन अछि द क्वेश्चन पैटर्न इन डायरेक्ट स्पीच रो क्वेश्चन पैटर्न कौन होछि क्वेश्चन वर्ड आसुछि तापरे एक्सिलरी वर्ब तापरे मिसुछि सब्जेक्ट तापरे मिसिबो मेन वर्ब हला सिधा होछि हमर क्वेश्चन पैटर्न जदि ताको चेंज टू स्टेटमेंट पैटर्न रे जदि ताको चेंज करबा ताहले क्वेश्चन वर्ड आसीबो तापरे सब्जेक्ट मिसियो तापरे मेन वर्ब मिसियो हला ता हे कि इनडायरेक्ट स्पीच हबो बुझिला क्वेश्चन पैटर्न रो स्टेटमेंट पैटर्न कले एई भली हेबो तापरे चलंतु एको मन रखंतु पिले तापरे दुईटा देखो एटा मन न रखले हबोनी हला दुईटा कोन दैछि व्हाई डू यू डिस्टर्ब तापरे व्हाई ही डिस्टर्ब यू इन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड टू ही देखंतु एटा यू थिला यूडा डायरेक्ट स्पीच ही हे गेला व्हाई डू यू डिस्टर्ब अछि कहीं तुम्हें डिस्टर्ब कर व्हाई ही डिस्टर्बड कौन दे यू इन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज टू ही इन इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर 3टा पॉइंट पढ़ला पर आम किसी एग्जांपल करें ही बुझो जो पर्यंत एग्जांपल है आपको टिके डाउट रहा तो 3टा टिके पढ़दवा द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट डू प्रेजेंट इज चेंज टू डिस्टर्बड पास्ट सिंपल एज द reporting verb asked in the past tense. Now look at this sentence. बर्तमान चलंतु से सेंटेंस टिको देखिबा. Granny said, "Are you really very sleepy?" तुम्हें कौन सतरे निदुआ की बहुत अलसुआ की इन इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन हम द क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन हम ग्रैनी इंक्वायर्ड यानी पचरा चकल if you were really very sleepy notice that in yes no question एटा yes no question हो कि नहीं रे उत्तर आसियो if किबा ताको weather if थिबो किबा weather थिबो हला is introduced at the beginning of the reported question which is the given statement pattern are you like आसियो किबा if he were एमती भी आसियो आर यू लाइक आसो इफ लगी कि वेदर इ वेयर एमती भी आसीपर तापर जी आम तो यहाँ पढ़ले कौन ना एक्सरसाइज रे धरा पड़ जाव सब ताहले चलतु एक्सरसाइज टी आम करवा एक्सरसाइज कौन दे बोले रिपोर्ट द फॉलोइंग डायलॉग ये जो डायलॉग अच्छी रिपोर्ट कर लेट मी स्लीप in the hall father Swami pleaded your office room is very dusty and there may be scorpio behind your law book अछि एको आंसर लिखबे Swami pleaded with his father to let him sleep in the hall adding that his office room was very dusty
and there might be scorpions behind his law book ଏଇଭଳି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦୁଇଟା there are no scorpions little fellow sleep on the bench if you like if you like can I have lamp burning in the room এটা কেমতি লিখে father addressed him all little fellow and said that there were no scorpio. He then told him to sleep on the bench if he liked. Swami then asked his father if he could have a lamp burning in the room. এইভাবে লিখিবে। তারপরে কোন ଅଛି তারপরে দেখন্তু No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habit. याकु आपण माने लिखिबे Father said that he could not, adding that he had to learn not to be afraid of darkness. He went on to say that it was only a question of habit and he would have to cultivate good habits. You will at least leave the door open. तापरे अछि हमर तापरे कोन अछि all right but promise you will not roll off your bed and go to your granny's side at night. याको लिखे स्वामी then asked his father at least to leave the door open. Father agreed to do so and told him to promise that he would not roll off his bed and go to his granny's side at night. ଏଭଳି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ହେଚଡ଼ା ସରିଗଲେ ଆମର ସରିଯିବ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ। ହେଚଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଏଚ୍ର ବି ଦୁଇଟା ଅଛି 1 ନମ୍ବର ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଅଛି ନା। 1 ନମ୍ବରର ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା କହିଦେଉଛି। ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା ଦେଖ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ୟୁ ରିଡ୍ ସ୍ୱାମୀ ୱାଜ୍ ଆସ୍କଡ୍ by his father to sleep alone in the office room at night. Imagine that you are Swami and give in the account of what followed from your point of view. Begin. It was a terrible experience. Father told me to sleep in the office room alone to do away with fear. Till then I always used to. You may like to end with my fear darkness, but he incident made of me hero overnight. ହେଲା ଏଇଟା ଲେଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ରିରାଇଟ୍ କରିବା। ରିରାଇଟ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଭଳି ଲେଖିବେ ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟେରିବଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ମି one night my father told me to sleep in his office room alone in the dark. He wanted me to get rid of the fear of the dark. Till then I always used to sleep in the hall beside my granny. That night I was forced to sleep alone in the dark. I was terribly scared and had horrible dreams. After some time I heard some roosting noise in the room. It so happened that something was coming close to me. Luckily I had a pocket knife with me. I pulled a blade out and pushed it into that thing. The man fell down with an agonized cry. Soon my father and all the members of my family came there. Though the burglar was catched. The next day, everybody was full of praise for my courage, but my fear for darkness remained unchanged, and I still had the habit of sleeping beside Granny. But the incident made me a hero overnight. ଏଭଳି ଲେଖିବେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କହୁଛି 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ବି କହିଛି ରାଇଟ୍ ଏ citation of statements about someone's character of behave action. ଆର ଉତ୍ତରଟା କହୁଛି କ'ଣ ଅଭିଜିତ saved a drowning child last month. One day he was returning home after visiting his uncle. He saw a child being carried out
carried away by the swift current of the river Kathajodi. He wasted no time and taking off his clothes at once jumped into the river. He catches hold of the child by the leg and slowly swam to the river bank. The child was unconscious. He gave him first aid. He then gave him artificial respiration. Luckily, the child came to his sense. In the meantime, the child's parent arrived and they embraced him and thanked him immensely for his brave act. ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କାମରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇକି। ତାହେଲେ ରହୁଛି ପିଲେ ପୁଣି ମିଶିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।